What's up, guys? I am back for episode 4. Minimal ingredients. Skipper, you wanna have brownie? Okay, it's gonna look really bad, but taste अच्छा है, so please. It's, I know it's a mess, kind of mess, but taste अच्छा है, and I'm having milk with it, so bye. That's like my pre-workout. Some vitamin C. Pre-workout rituals and आज का program. I don't know if you can see. Obviously you can't. But forget it. It's shoulder and arms. Yup. आज arms pump होने वाला है. So getting ready for the session. मैं वेंसडे मॉर्निंग थोड़ा सा काम होता है. यूजली मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे इज़ मॉर्निंग्स मेरे सेशंस होते हैं. And then I work on editing, then I take care of my online clients. But yeah, Wednesday is something which I give to myself a little bit in the middle of the week. But इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. Love this day because whenever I have a training on this day, it goes really well because like I'm well rested, I've had my time. Let's call my pre-workout buddy. I don't call him always. No. Because I call you before my workout and you have this face. Yours. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh. He know he won't have it, he knows it's all back to these ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke. He's so stacked that he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass him. Back to reality. Okay, biceps or triceps, shoulder, trained and weight. Let me see if you guys can see this. I don't know, मुझसे flex नहीं हो रहा यार अभी, but what am I doing? But yeah, it's done. It's time to eat. De-stress and eat. काफ़ी पैसे आ गए मेरे पास. मैं स्टारबक्स इतना नहीं पीती हूँ, बट जब भी मैं पीरियड पे होती हूँ अपने, मैं हमेशा एक हॉट चॉकलेट लेती हूँ. एंड अगर कोई भी मुझे पर्सनली जानता है उन सबको पता है कि दिस इज़ माई गो टू ड्रिंक फॉर पीरियड्स. लाइक व्हेनेवर आई गेट इट, हॉट कोको. सो आज होने वाला है हॉट कोको विद चिप्स. बाय द वे ये आइडिया मुझे एक मीम पेज से मिला था जो इंस्टाग्राम पे है. यू शुड डेफिनेटली फॉलो देम. इट्स लाइट ह्यूमर. और इस मीम से मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई टेंड टू टॉक अ लॉट अबाउट माई इमोशंस एंड फीलिंग्स. So why not have like a segment incorporated in vlogging कि जब मैं चाय पी रही हूँ it's gonna like be about okay
guys, we are sitting and talking about this. I am that kind of a person. Okay, let's cut to the chase. मैंने अभी मेरी वीडियो देखी है, इसके पहले it was literally 70% of my vlog, क्योंकि May 15th के बाद, मतलब एपिसोड 3 ख़त्म होने के बाद जब मैंने एपिसोड 4 की व्लॉगिंग स्टार्ट करी, मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज maybe just not believing in what I'm doing. And ये मुझे और अच्छे से रियलाइज़ हुआ जब मैं 1 जून को बैठी थी अपने मंथ को रिव्यू करने के लिए. Let's look at the full clip. What's up guys? It's been long. मैंने जो लास्ट अपना व्लॉग बनाया था वो कुछ 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ते पहले था और मेरे को लिटरली मन नहीं कर रहा था बस करने का. And I realized that there's a reason मेरे को मन क्यों नहीं कर रहा था. And that was because of maybe just not believing in what I'm doing. ये हफ्ता मैंने नोटिस किया कि छोटे छोटे थॉट्स की वजह से तुम्हारा जो आउटलुक होता है अपने ऊपर या लाइफ के ऊपर चेंजेस इन द लॉन्ग रन. द छोटे थॉट्स विच आई वाज गेटिंग वाज मोस्टली अबाउट नॉट बिलीविंग इन माई सेल्फ. दीज वर रियली टाइनी थॉट्स. मैं ये नहीं बोल रही कि अच्छे थॉट्स नहीं थे मेरे दिन में, थे, बट वो छोटे थॉट्स को मैंने मैनेज नहीं किया, वो छोटे थॉट्स को मैंने इग्नोर किया. तो जब वो हर दिन आती रहती है, इट टेंड्स टू जस्ट सिट इन योर ब्रेन इन द बैक ऑफ योर हेड. एंड आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट आई एम डूइंग समथिंग अबाउट इट. तो मैंने इसके बारे में जर्नल किया ना. देन आई रियलाइज आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स कि मेरे को कैमरा उठाने का मन नहीं किया इज़ बिकॉज ऑफ दीज थॉट्स दैट आई हैव बीन हैविंग रेगुलरली. लाइक इवन इफ दीज थॉट्स वर फॉर 1 सेकेंड एवरी डे. बुक सुबह सुबह पढ़ती हूँ 1 पेज का, एंड उसमें आज लिखा हुआ था, देयर वाज दिस वन लाइन which said, wait, I'm gonna read it to you. It said, your daily choices stack up to craft your destiny. It's so fucking true. But yeah, I just wanted to turn on the camera and wanted to talk to you about this and be honest about this. सबके journey में आता है ये, and I know that I do believe in myself. So yeah, I hope you believe in yourself and what you're doing in all the daily choices that you're making. And मेरा ज्ञान इधर ही समाप्त होता है. I give a lot of ज्ञान by the way, anyway, but unnecessary भी होता है कभी कभी. But मैं अभी एक और क्लिप दिखाने वाली हूँ जो 3-4 दिन इसके पहले थी. और मैं क्यों ऐसे उल्टा क्लिप दिखा रही हूँ इज़ बिकॉज मेरे को एक लिंक शेयर करना है इसके बीच में. इस वीडियो को देख के तुम्हें पता चलेगा हाउ जो मैं बात कर रही थी अबाउट दो स्मॉल फीलिंग्स दैट सिट एट द बैक ऑफ योर हेड, अगर तुम अच्छे से उसे एड्रेस नहीं कर रहे हो, दैट गेट्स मैनिफेस्टेड इन योर एक्शंस. एंड यू विल सी दैट इन दिस क्लिप. सो लेट्स वॉच दैट क्लिप एज वेल. आई नो ये थोड़ा रैंडम है, बट I was working out and पता नहीं क्या हुआ बीच में, middle of the workout I started feeling a little weak and I was like नहीं मन नहीं कर रहा है, पुश नहीं कर पा रही हूँ मैं, and I'm not able to execute the exercise properly and मेरा बस मन उठ गया पूरा. And I just realized that sometimes we just forget to have fun. Like you're working out, absolutely you should be focused, you should be into it. You should be present. Whatever you're doing, you should be into it. It's like meditation. And I wasn't doing that because while I was doing the set, मैं ये सब सोच रही थी कि क्या गलत कर रही हूँ मैं. And ultimately conclusion ये होता था कि workout छोड़ दे शिवी. But yeah, this realization by the way मेरे को बार बार चाहिए रहती है because मैं हमेशा भूल जाती हूँ ये कि थोड़ा एन्जॉय करना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए. एंड आई जस्ट सडनली लाइक पर्सपेक्टिव मैंने चेंज किया अपना, एंड अच्छे गाने चलाए मस्त एकदम पंजाबी सॉन्ग, एंड नॉट क्वेश्चनिंग माई form too much or my execution too much, and just on some days you just need to flow. So I'm flowing. Yeah, the point of that link video was ki how that small things in my head or the small thoughts that were coming in my head जो मैंने address नहीं करी थी, जो मैंने ignore कर दी थी, did actually manifest in what I was doing. And that's why मेरे लिए journaling is like very important, at least for me, because I was the kind of person जो पहले कोई भी emotion को address नहीं करती थी, कोई भी, like irrespective जो भी हो मैं कोई नहीं करती थी. I'm not saying I had a sad life, I had a brilliant life before, I had a very fun life, but obviously when you like when you feel happy you feel it, and when you feel sad I had this tendency to not feel it, to just like
stay away from it. So I feel that's not good, and that's why for me it's really important, because for me journaling is like a process जिससे मैं खुद सीख रही हूँ of how to feel everything, every emotion. And also because I work for my own self, like I don't work for anyone, so it's very important for me to know myself before I put myself out there. This is what I believe in, and this, you will see this in every video. You need to lead yourself. It's not about leading other people. A lot of people say that you need to lead other people, you need to influence them and blah blah blah, inspire them, but उससे ज़्यादा it's important to lead your own self. The only reason मैंने ये एपिसोड 4 स्क्रैच नहीं किया, मैं एक्चुअली सोच रही थी कि एपिसोड 4 स्क्रैच करती हूँ और एपिसोड 5 व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ आज से. बट 2 kind of messages that I'm spreading with this video is about imperfection and how imperfection is awesome. And the second is to lead your own self. Like, be your own fucking leader, be your own fucking boss. And yeah, that is about it. ट्रेनिंग बाय द वे काफ़ी अच्छी रही थी, एंड आई स्टार्टेड सीइंग चेंज. एज आई सेड, मेरे प्रीवियस एपिसोड 3 में मैंने बोला था कि आई एम फोकसिंग मोर ऑन माई आर्म्स, माई क्वाड्स. Hamstring was the focus, but obviously home workout mein it's very difficult to get a hamstring workout in when you have very limited equipment. But nevertheless, my upper body is definitely my one of the most biggest priorities, and I can see the change. I can see my delts, I can see my bicep and triceps growing. So yeah, that was episode 4 for you. I know काफ़ी छोटा है because मैंने इतना record नहीं किया था. I was in the zone whenever I was working, and obviously the other reasons that we just discussed. But other than that, we are good. I'm good. I hope you are doing good. But हाँ, अभी मैंने थोड़ा स्लो लिया हुआ है बिकॉज मैंने थोड़ा लाइफ का पेस स्लो किया हुआ है बिकॉज period, PMS, and I'm working out, I'm doing the work that I'm supposed to do, that I obviously have to do, and other than that I'm really just like relaxing a little bit because my body goes through a lot when I'm PMSing. So if you are on your period and watching this, I hope you have hot cocoa and I hope you enjoy it. I will see you in episode 5. Yay! Come together, unify and don't divide.